Department of Law. Am I audible to everybody? Yes, audible. Yes, audible. Okay, thank you. Yes, sir. Yes. So, so I am working in the Department of Law, AMU Center, Mallapuram, and this responsibility actually given to me to conduct this current session and maybe in the consecutive next session. So, therefore, first of all, I would like to congratulate to every participants to have this great session, and I'm sure we are going to have a great session. So let me introduce first our today's resource person for this session and the consecutive next session with the 30 minutes of break. So in this session and the next session, we have today Professor Aasim Zafar. Sahab, he is a professor at the Computer Science Department, Aligarh Muslim University, Aligarh. He holds in Master in Computer Science and Applications and obtained degree in PhD in the Computer Science from Aligarh Muslim University, Aligarh. As far as his research area is concerned, his interests include mobile ad hoc, sensor networks, image processing, video analytics, information retrieval, e-system, security, e-security, virtual learning environment, neuro, fuzzy, and soft computing, software engineering. And as far as this teaching interests include computer networks, network security, software engineering, e-system, database management system, computer programming, uh, and so these are the interest area of research and teaching. Um, Furthermore, I would like to highlight some of the achievement and contribution that he made nationwide as well as at the national level as well as in the international level. He has experience of more than 29 years, both at national and international level. And he played a co-PI in one of the very important project funded by MHRD Government of India, where AMU is one of the partner institute in collaboration with IIT Kanpur. And that project is about cloud-based multilingual and multi-institutional library management system and election management system. And he also has a 5-year tenure of international teaching assignment at King Abdulaziz University, Jeddah. He has executed 3 research projects over there, and and he received the Excellence in Teaching Award from the King Abdulaziz University, Jeddah. Besides teaching, he also served as the chairperson of the chairperson of the Department of Computer Science from 19 January 2021 to 18th January 2024. And he is presently UGC SWAM coordinator of IGNOU Study Center, AMU, convener of the University Website Committee, convener of Digital Monitoring Cell, members CIQA, CDOE, Development, Distance Online Education, Quality Assessment, and member of various high-powered committee constituted by the Honorable Vice Chancellor of AMU. He has immensely contributed in ICT infrastructure development of the university, as well as at King Abdulaziz University, where he has successfully led the academic accreditation unit of KAU in the capacity of the director to achieve American Accreditation Board of Engineering and Technology. As SWAM coordinator, he has taken initiative and successfully led the development and launch of 31st MOOCs for the July 2024 semester on the SWAM platform by the faculty members of the AMU. He has been actively working in the area of e-learning, utilizing open source ICT tools, technologies in research, teaching, learning, and students' evaluation since 1995, both at graduate and postgraduate levels. He has expertise in educational technology and contributed in spreading the culture of ICT-enabled pedagogies among teachers of higher education institutions through various workshops, orientation, training, capacity building program. He has also organized various webinars, workshops, and training programs on e-content development and ICT-related topics. I am sure that we are going to have great benefit from this lecture. Now, I invite Professor Aasim Zafar sir to lead the session. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Imran, for your detailed introduction and kind words. So thank you. Hope I am audible to all of you. Please participate. Yes,
Confirm. Okay, thank you. So today I'll be discussing with you the e-content development for SWAM platform. And during this lecture, we will see the complete life cycle of massive open online courses. Hope my screen is visible to all of you. Please confirm. Is my screen visible to all of Yes, you? sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, fine. So we will try to discuss the following topics during this session, that is need for online teaching and learning, role of synchronous and asynchronous mode of communication. After that, we will see how to supplement online teaching through open educational resources or MOOCs. MOOCs stands for massive open online courses that are available on SWIM platform or any other platform. Next, we will see various e-content development initiatives, and particularly we will be discussing one open educational resource which is known as EPG Pathshala. After that, we will see the development of MOOCs, massive open online courses, that is a different educational space. Then we will discuss how we can develop course for SWAM platform. What are the various courses which are available on SWAM platform, that we will discuss. And we will see what are the other platforms for launching or uploading massive open online courses. And the second last discussion we will be having, is there any mechanism for funding for development of MOOCs? If anybody or if any one of us is interested in development of massive open online courses for SWAM, what are the funding prospects, that we will discuss, or from where we can get the funds. And lastly, we will see the complete life cycle of massive open online course. So that is the topic of discussion for today's session. First of all, before I go into the detail of the sessions, there are two things which needs to be clarified at the very beginning, that is known as synchronous and asynchronous mode of communication. Basically, whenever we are communicating with the audience in online mode, there are two ways of, or you can say there are two different modes of communication, or two different ways of communicating with the audience. Number one is known as synchronous mode of communication. What happens in the case of synchronous mode of communication? Both the communicating parties are logged in into the system in the same span of time. Here in this case, the various examples are given over here. You can see on the slide: Google Meet, Zoom, WebEx, or Microsoft Teams. So they are examples of so they are example of synchronous mode of communication. So what happens in the synchronous mode of communication? It is mandatory that both the communicating parties, both the listener as well as the speaker, are logged in into the system in the same span of time. So this is here in this our case. In our case, we are communicating with each other, or I am communicating with you people using Google Meet, and it is compulsory that both the communicating parties, you as well as I, must have logged in into the system at the same span of time, that is from 3:30 to 5 p.m. Then only the communication will happen. And such mode of communication are known as synchronous mode of communication. Another mode of communication is also there, that is known as asynchronous mode of communication. And here it is not mandatory that both the communicating parties are logged into the system in the same span of time. Am I audible? And do you have any problem in listening or understanding the language? Please clarify to me. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, fine. Yes, sir. Go ahead. Okay, good. So another mode of communication is known as asynchronous mode of communication. What happens in asynchronous mode of communication? It is not mandatory that both the communicating parties are logged into the system. Say, for example, you are writing a mail to your friend, say, for example, who is in London, UK. So it is not necessary that both you and your friend first or must be logged into the system in the same span of time. Whenever you have the free time, you just write down a mail and simply send it there. That mail will remain in the mailbox of your friend. So whenever your friend is free,
Whenever he logged in into the system, he will see that, okay, I have got an email from my friend and he can read it. So these kind of communications are known as asynchronous mode of communication. So both mode of communications are essential for having effective communication with the students or with the learners basically. So email, discussion forum, Google Classroom, Moodle, they are the examples of, or any learning management system, these are the example of asynchronous mode of communication. So what happens in these, whenever one party has the leisure time, free time, he writes a message over there, and whenever the another communicating parties have the time, they can log into the system and they can check, oh, there, okay, fine, I have got a message from my friend, and he or she can reply back to you. But it is not necessary that both the parties are logged into the system in the same span of time, as it happens in case of synchronous mode of communication. I hope it is clear to you what is synchronous mode of communication and asynchronous mode of communication. Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Now, role of multimedia in this content and teaching and learning, we will be emphasizing over here. So just to give you a background of online teaching, I will go back 2 to 3 years back. During the COVID period, or even go before the COVID period basically. So before the COVID period, say for example in 18, 19 and 20, we were trying our level best to train the teachers to have some sort of online teaching experiences, and we are training them, or trying to train them, to be more conversant with online mode of teaching. But truly speaking, the result was not very encouraging. Despite our efforts, we were not getting the desired results. The reason was very obvious, because all of us are very much used to of face-to-face of meeting, traditional mode of teaching, face-to-face mode of teaching, where we go into the class, give a lecture over there. Either we are using some multimedia tools, some projectors, or anything else, but we are used to of the face-to-face mode of teaching and feel comfortable in that. Whenever it comes to deliver a lecture in the online mode, it requires some kind of technical skills basically. So in initial days, we were facing difficulty in bringing the teaching community to this online mode of platform. But when COVID happens during 21-22 session, every one of us started delivering our lecture in online mode using some kind of tool, whatever tools were available, and in which tool we felt ourselves comfortable, we started using that tool, and we have started engaging our student to safeguard the academic interest of the student. Because at that time we were left with no option but to go for online mode of teaching, because we as a teacher were locked in our homes, students were locked at their residential places, so there was no way of gathering of both the teachers and a student at one place, as it happens in case of our normal days teaching and learning process, that we gather at a classroom and we come to our college, go to the classroom and interact with the student in the classroom. This was not possible at the time of COVID. So we were left with no option but to go for online mode of teaching, or in other words, we can say that we were compelled as a teacher to go for online mode of teaching. And it is said that necessity is the mother of invention. तो उस वक्त क्या हुआ कि हम सभी लोग somehow स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, जो भी टूल्स हमें आसान लगता था, जो भी टूल अवेलेबल था, किसी ने गूगल मीट पे आसान कर दिया, somebody was using Zoom, somebody started using Webex, somebody MS Team, somebody even Zeet, जो भी मिला जिसको, they started using that tool to engage the students in the online mode of teaching. So there were two things basically. We were engaging the students in the using some video conferencing tool, just like Google Meet, Zoom, जहाँ पे हम कुछ classes वगैरह ले रहे थे, and we were using asynchronous mode of communication as well for sharing our class notes or teaching material to the students. Say for example, some of us were using Google Classroom, that is freely available mini learning management system, Google Classroom. So some of us were using Google Classroom for interacting with the student or for sharing the course materials with the student, and even for conducting examinations. Some of us were using Google Form for sharing materials with the student. Some of us were using our website for sharing course material with the students
using asynchronous mode of communication. But we were communicating with the students somehow, either in the synchronous mode or using asynchronous mode of communication, or sometimes we were using both as a combination. So we were taking the classes in the using synchronous mode of communication, or we were engaging the students in the online mode using synchronous mode of communication, either by using Google Meet or WebEx or Zoom, whatsoever tools were available, or whatsoever in which whatever tool we were feeling comfortable ourselves. So we started using that tool, and we were sharing our course material and other teaching materials with the student using Google Classroom or learning management system or whatever things are there. So okay, this happened for the first semester. COVID continues. So we have learned a lot of lesson, and we started delivering the lecture in a better way in the second phase of COVID. So we did it for at least 3 or 4 semesters. We were locked and we were separated from our students for at least 3 or 4 semesters. So we tried to engage the student in the online mode of teaching and learning using various tools which were available during the COVID period time. And at the end means as the time progresses, we started feeling comfortable in online mode of teaching. Not only we, but we as a teacher as well as our students were more comfortable with this mode of teaching, and they become used to of these mode of teaching. So compared to our first session which I had conducted using online mode during the first phase of the COVID, we were at a much better position after 2 or 3 sessions, which after 2-3 semester we can say, or at the end of the COVID period, we were in much better way as far as the online teaching and learning process is concerned. So we were feeling much more comfortable on that. So okay, so that was the period, and we have learned a lot of things during that period of time. That was a very difficult time, and fortunately that COVID period is over now, and we are back to our classroom teaching. We are normal days, we are back to our classroom teaching. The students and teachers are gathering at the college or university, and we started communicating with them in the face-to-face mode of teaching. Then the question arises, then sir, if the COVID is over, the students and teachers are back to our normal days, then why do we still need online mode of teaching? At that period of time, it's okay, fine. At the COVID period, there was no option. So we had resorted, or we were compelled to go for that mode of teaching. But nowadays, both of us means the student and teachers are comfortable enough. We are coming to the college, we are gathering at one place, and we can engage the classes in the face-to-face mode of teaching. Then why do we need this online mode of teaching? The question arises over here. Participants, am I clear what I am trying to tell you? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि भाई जब कोविड पीरियड इज ओवर, देन व्हाई डू we still persist on online mode of teaching? क्यों इसकी जरूरत है? Why do we need this mode of teaching anymore if both the students and teachers are back to the normal days? तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब कोई एक नई चीज आती है, शुरू में हेजिटेंट होते हैं, हम भी हेजिटेंट होते हैं, टीचर्स भी हेजिटेंट होते हैं, एनी दिस इज ह्यूमन नेचर. व्हेनेवर समथिंग न्यूज कम टू द मार्केट, everybody is hesitant whether ये सफल होगा नहीं होगा, whether it will be successful or not, ठीक होगा नहीं होगा. लेकिन जब हम उसको यूज कर लेते हैं और लगता है नहीं ये तो बड़े काम की चीज है, अच्छी चीज है, then not only we started using it but we convince others also to go for that. तो आपने अभी एक चेंज देखा होगा पूरे ओवरऑल सिनेरियो में, वर्ल्ड लेवल सिनेरियो में आपने एक चेंज देखा होगा कि मेनी ऑफ द आईटी कंपनी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी कंपनीज. However, this concept was there in the foreign countries for much before time, but in India, this has gained momentum during COVID period time or after COVID period time, that a culture is spread over here is known as work from home. आप सभी लोगों ने सुना होगा सर, work from home. Yes, sir. The employees who were working for IT industries, initially they had to go to the office. They remain present over there from 9 a.m. till 5 p.m. whatsoever office hour is there. So during office hour, they had to be present in the office. They used to work over there, and after the office hour, they used to come to their home. This was the normal routine before COVID.
But during COVID and after COVID, this work from home culture become prevalent. आप किसी भी IT इंडस्ट्री के प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं, वर्क फ्रॉम होम. तो वर्क फ्रॉम होम क्या कर रहे हैं? He is remaining or is living with their family members at their home, and still they are capable of working for the industry. जो भी काम उनको दिया जा रहा है वो घर से काम कर करके और वो वापस कर रहे हैं वहां पर. So this kind of culture has become prevalent nowadays. Have all of you have observed this thing or not, sir? Please confirm. Yes, sir. दूसरा एक और कल्चर, हम टीचिंग एंड लर्निंग की अगर बात करें आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो आप देखिएगा कि पहले क्या हुआ करता था, मेनी ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज यूज्ड टू बी हेल्ड in the offline mode. Offline mode का मतलब है कि you had to go over there and you have to go in person to attend the conference over there. You will have to present the paper over there. You can interact with the participants over there. But nowadays, the culture is there online presentation, or you can say hybrid mode of presentation. Some of the people who do have the time, they are going over there, or some of the people who could not go, they can present sitting at their own place. वो अपना पेपर यहीं से present कर देते हैं. तो or you are getting the equal benefit for these things. तो ये भी एक सर प्रथा आपने नोट किया होगा, ये चेंज हुआ है या नहीं सर? आप लोगों ने सभी ने नोट किया कि नहीं सर इसको? Yes, sir. Is it happening? Okay. Next, you might have noticed कि जो पहले मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स होते थे बहुत सारे, say for example दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कोई मीटिंग हो रहा है, the principals of the colleges or the vice chancellor of the university were called to Delhi, and that meeting used to take place in some conference hall over there, and the concerned minister or under secretary used to come over there. They give the presentation and they used to interact with them, and they keep on exchanging their views over there. So all these things used to happen in physical mode. Physical mode means where both the parties are present in the face-to-face mode of communication. Even this refresher course or faculty development program, which is conducted in this mode, basically online mode, this used to be held in the physical mode. Physical mode means offline mode. So all the participants from different parts of the country used to come at one place. That is, they used to come at AMU, and there is a provision for staying and lodging over there. So boarding and lodging arrangements was there, and they used to come to the classroom, and the teachers and the students used to interact with each other in face-to-face mode of communication. But nowadays, you just see the change. Rarely some meetings of the ministry are being held in the face-to-face mode of or physical mode. Most of the meetings are being conducted in the online manner. That is being successfully conducted over there. They are getting the they are achieving the outcomes of the meeting. FDPs, refresher course, orientation programs, most of the MMTCs and UGC, HRDCs centers are conducting these programs in the online mode. Have you noticed all these changes or not? Yes, sir, we have. है ना, आपने देखा होगा ये सब चीजें चेंज हुई और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, एंड वी आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल. हमको लगता है ठीक है, इट इज नॉर्मल, जैसे पहले हुआ करता था वैसे अब भी हो रहा. सो वी आर गेटिंग दैट सिमिलर काइंड ऑफ आउटकम विथ ऑल दिस. सो आई मीन टू से दिस ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरेक्शन हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल. ये हमारे लिए अब न्यू नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया. अब इसको हमको नई चीज नहीं लगती. इनिशियली इट वाज न्यू फॉर अस. इनिशियली वी वर हेजिटेंट इन यूजिंग ऑल दीस थिंग्स. हमको पता नहीं था कि वेदर it will give the desired results or not, or outcomes or not. But nowadays it appears that okay, it is happening fine. We तो ठीक है, इसमें काम चल रहा हम लोगों का और ठीक ठाक हो रहा सब चीजें. Similar is the case with the teaching. जो आपने लड़कों को पढ़ाया 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर यानी 3 साल तक जो हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में टीचिंग की, उसके बाद the student also started feeling कि ठीक है ऑनलाइन मोड में टीचिंग हो जाता है, तो क्या जरूरी है कि क्लास में आना, अटेंडेंस लगाना. और say for example we are coming to the campus from 5 or 9 a.m. in the morning and returning back to home 5 p.m. So why do you must waste 8 hours or 9 hours time in the campus for having 1, 2, 3 or classes, 3 or 4 classes? Rest of the periods are the leisure. So sitting at our home, we can attend the classes if facilities are there in the online mode of teaching. So with the student, the teaching community also, this phenomena among teaching community also, this phenomena become popular, and even the students and teacher are feeling comfortable with this mode of communication.
Realizing all these things, what UGC did basically, UGC has announced a gazette notification that is known as UGC Regulation 2021. And as per that notification, UGC says that a student may take up to 40% credit of their program in online mode. In online mode means by completing courses or by completing MOOCs courses which are available, or by completing online courses which are available on the SWAYAM platform. What I mean to say that, say for the example, a student is awarded UG degree after completion of 100 credits during 3 years program duration. Say for the example, during 3-year or 4-year program duration. Fine. UGC notice, and for example, say one course is of 4 credit. One course is of 4 credit, and you are giving UG degree once a student earns 100 credit. 100 credit means if the student successfully completes 25 courses, because each course is of 4 credit, so 25 into 4 is equal to 100 credit. So if a student, I'm taking an example just to make it clear. So if a student successfully passes in 25 or completes 25 courses during the allocated time period of 3 years, then the student will be eligible for award of UG degree. Am I clear? यहाँ तक सर बातें सही है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Okay. Yes, sir. UGC regulation says that out of 100 credit, which is required for awarding a UG degree, a student may take up to 40% of the credits, or may complete up to 40% of the credit of by successfully completing the courses which are available on the SWAYAM platform. तो यूजीसी रेगुलेशन ये कह रहा है कि उसमें से 40 क्रेडिट का मतलब अगर एक कोर्स 4 क्रेडिट का 10 कोर्स, तो 10 कोर्स एक लड़का कहां से कर सकता है सर? स्वयं प्लेटफॉर्म में जो कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज, वहां से कंप्लीट कर सकता है। तो बोला अच्छा, तो फिर कहने का मतलब अगर 10 कोर्स वहां से कर लेगा तो बाकी क्या बचे सर? तो बाकी बचे हमारे पास 15 कोर्स। 25 कोर्स टोटल करना था, तो ठीक है, तो 15 कोर्स उसको करना है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज सिस्टम में रहते हुए इन द फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग में। बाकी 10 कोर्स वो कर सकता है कहां से सर? ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग से कर सकता है। यानी ऑनलाइन मोड में जो कोर्सेज अवेलेबल है स्वयं प्लेटफॉर्म से, द स्टूडेंट कैन रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज ओवर देयर एंड follow up these courses, complete these courses during that semester, and at the end of the semester examination is conducted. If the student successfully completes or passes the examination, then he will be awarded 4 credit or whatsoever credit are there for that course, and that credit will be reflected back to the grade sheet of the student, which is being issued to the student from his or her college or university. तो अगर मान लीजिए, मैं आप कहने के लिए बता रहा हूं आपको कि एक सेमेस्टर में मान लीजिए एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज करने हैं एक स्टूडेंट को, लेट इट बी जस्ट फॉर एन एग्जांपल। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सेमेस्टर क्या दिखता है? एक ग्रेड शीट इज अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट इन विच मार्क्स फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आर रिटन ओवर देयर। यही होता है या नहीं होता है? जरा बताएं हमें प्लीज, एनीबॉडी कैन कंफर्म मी। कोई सर, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर क्या होता है? अगर 5 कोर्स एक सेमेस्टर में बच्चे को पढ़ना है और वो पांचों में पास कर जाता है, तो उसको जो ग्रेड शीट मिलती है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, उसमें क्या लिखा हुआ होता है? उसके मार्कशीट में क्या लिखा हुआ होता है? 5 पेपर के नाम लिखे होते हैं एंड हाउ मच मार्क ही और शी हैज ऑब्टेन्ड, इट इज रिटन ओवर देयर। यही रहता है सर, ये कुछ और होता है? बताइए। Yes, sir. Okay, fine. Here, as per UGC Regulation 2021, which says that a student may take 40% of the credit from स्वयं courses. चलिए ठीक है। Following that principle, अब क्या करता है एक स्टूडेंट ने क्या किया? 5 कोर्स कहां से किया सर? यूनिवर्सिटी से किया उसने, ठीक है, तो उसके ग्रेड शीट में 5 कोर्स के नाम लिखे हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट सम अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट। These student have completed 4 course from the university and they have registered for 1 course on the SWAYAM platform and they are completing it in an online mode.
तो कहने का मतलब 4 कोर्स तो आपके साथ पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फेस टू फेस कॉलेज में पढ़ रहा है। एक कोर्स उसने क्या कर लिया, ऑनलाइन मोड पे रजिस्टर्ड किया उन्होंने और वहां से कंप्लीट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर he gets a completion certificate for that online course. उनको मिल गया कि हाँ ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर गया, सिक्योरिंग 75% ऑफ मार्क, दैट्स फाइन। अब जो उसको ग्रेड सीट मिलेगी सर, तो वहां पर 4 कोर्सेज जो उसने आपके यूनिवर्सिटी से किया है वो भी लिखा हुआ होगा, और एक कोर्स जो उसने कंप्लीट किया है कहां से, स्वयं प्लेटफॉर्म से, दैट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्रेड सीट ऑफ दैट स्टूडेंट। दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड 5th कोर्स फ्रॉम स्वयं प्लेटफॉर्म which titled this thing and secured 75% of mark, that's all. This is known as credit transfer policy. Credit transfer का मतलब if a student completes a course from online mode using swayam platform, then that earned credit after successful completion of the course will be reflected on the grade sheet of the student. Sir, am I clear or do you need any more clarification on that? Yes, sir. Clear, sir. तो कहने का मतलब ये है कि यूजीसी ने मैंडेट कर दिया, यानी जरूरी कर दिया हम लोगों के लिए, मेड इट नेसेसरी कि दैट स्टूडेंट कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन तो इसका मतलब है कि फिर हु विल टेक दीज ऑनलाइन कोर्सेज, हु विल मेक द कोर्सेज फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग दीज ऑनलाइन कोर्सेज, दैट्स फाइन, बट ड्यूरिंग द कोर्सेज द स्टूडेंट में need to ask some queries. There may be some queries of the students. Who will address the queries of the student? Who will make the questions? Who will make these courses? So the teachers are required there to make online programs or the courses to be offered in the online programs. And these online courses, online teaching and learning is going to, देखिए ना सर, 40% कोर्स, 40% इज नियरली 50%। कहने का मतलब आधा कोर्स वो ऑनलाइन मोड में कर सकता है स्टूडेंट। तो इस कल्चर को देखते हुए कि द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, यूजीसी ने ये कर दिया कि 40% तक का कोर्स लड़का वहां से ले सकता है। सो आई मीन टू से दैट इवन द कोविड पीरियड इज ओवर, ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉट गोइंग अवे फ्रॉम अस, इट इज गोइंग टू रिमेन विथ अस इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट सर और नॉट? यस सर। है ना, तो ये अब रहेगा, तो जब रहेगा किसी न किसी फॉर्म में हमारे साथ, तो बीइंग ए टीचर वी मस्ट अडॉप्ट टू दिस गुड चेंज। तो हमको सबको क्या कर लेना चाहिए, इस चेंज के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस, बिकॉज वी कैन अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपने सुना होगा सर कि वो जो पहले हुआ करते थे डायनासोर, सब डिस्टिंक्ट हो गए, क्यों? कि दे कुड नॉट अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए उसके साथ साथ वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लोग विलुप्त हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। बट द ह्यूमन बीइंग्स आर देयर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो क्यों है वो? कि वो क्या करता है, ह्यूमन के खास नेचर है या अच्छाई है या खूबी है या जो भी कहें आप, मेरिट है कि दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और एंड हेंस दे आर रिलेवेंट इवन नाउअडेज। तो हमको भी सर अगर अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में रिलेवेंट रहना है, ऑब्सोलीट नहीं होना है, then you will have to adopt to the recent changes which are being taking place in our teaching and learning environment, and online teaching and learning in one such environment. तो जो changes आया है, we must welcome this change, and not only welcome but we must embrace to this change, we must embrace to this new technology, and we must adopt to online mode of teaching and learning. अगर ऐसा हम नहीं करेंगे then very soon will become obsolete sir. जो भी टीचर अपने आप को इस मोमेंट, that is why we are being trained as a teacher, we are being given some sensitization program or training program like FDPs and such kind of programs over there, so that we can align ourselves with this new or upcoming mode of teaching that is known as online mode of teaching and learning. यहाँ तक सर बातें सर समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही सर? सूरत है Sir, I think we are getting. yes sir, fine. Now come to then sir, okay, we agreed that online mode of teaching रहना है। तो ऑनलाइन ये भी हम एग्री करेंगे फिर कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग। फेस टू फेस ऑन टीचिंग में द स्टूडेंट एंड टीचर्स आर sitting face to face either, or they are present in the face to face mode, and we can interact with them and we can convince them, or we can impart the concept which we are trying to
make them understand in a better way, because we are present in a face-to-face mode of teaching students. But in online mode of teaching, the teachers and students are not available in the face-to-face mode of teaching. Here I can see that around 75 participants are there, but I cannot see the faces of anyone. Many of the participants have just logged in the system and they are doing a lot of other course or job. Somebody is enjoying this cup of tea. Somebody is teaching their children. Somebody might be doing anything, or somebody is listening to this lecture. I mean to say, in this mode of communication, we don't have control on the audiences or the students with whom I am interacting or with whom I am trying to communicate. So this is the major difference. And if this is the difference, then it is an established fact that if the audience or the student, in this case, if the student is not attentive towards yourselves during the lecture or during the duration of the lecture, then the teaching and learning process will not be smooth or will not be effective, I mean to say. What I mean to say, okay, if you are delivering the lecture and if somebody is not attentive towards yourselves, they are not listening to your lecture attentively, then the teaching and learning process will not be effective. I'm just trying to give an example. Even if the face-to-face mode of classroom teaching I am talking about, in the face-to-face mode of teaching, sometime you might have noticed, because all of us are experienced teachers, so you might have noticed all these things. Say, for the example, we are teaching a student, teaching a class of 60 students or 50 students or even 30 students, and we are teaching them. And I find that one student, say, named Raju, is looking beyond the window. He is looking towards the window. We do have the control mechanism in our hands. We can say, or we can ask, hey, Raju, why are you looking outside the window? So he becomes attentive towards yourselves. So this kind of control is there in case of face-to-face mode of teaching. But here, if somebody has switched off the camera and they are just taking a sip of the tea, we cannot see them. Even somebody are busy in other course of the work, we cannot see them who is doing what. I mean to say, if they are not attentive towards your lecture, the teaching and learning process will not be smooth. I'm trying to give another example just to make it clear. Say, for example, as a teacher, you are giving a lecture in the class. Sometimes you might have noticed the student who is sitting in the front bench is physically present in the class and he is mentally not present. Say, for example, सामने बैठा हुआ तो है और वो सोच रहा है घर के बारे में कुछ, maybe thinking about his mother, father or his hometown, कुछ भी सोच रहा हो. Though he is sitting in the class, though he is present in the class, sitting on the front bench, so physically he is present, but mentally he is not present at that time. आपने इस चीज को, being experienced teacher, you have just noticed it. Okay, oh, this time Raju is thinking something else. आपने उसको खड़ा कर दिया. Raju, please stand up. Raju खड़ा हो गया. आपने पूछा, what was the last sentence I had uttered? Raju is blank. Raju बोलेगा कि नहीं नहीं सर नहीं सुना. Why not? You are sitting on the front bench, physically you are present in the class. तो राजू ने कहा कि सर वो मैं थोड़ा सा घर के बारे में कुछ सोच रहा था. Have you noticed this kind of scenario in your class or not as a teacher? Sir, am I asking? Yes, sir. Yes, sir. So what happened in this case? Try to analyze the situation. What happened in this case? Though the student was present, physically present in the class, but he was not attentive due to any reason. He was not attentive in the class. And if he is not attentive, whatever sentence you have uttered, the last sentence, he is not able to recapitulate or repeat that sentence because he has not listened. Because though he was present in the class, physically present, he was listening all these things, but mentally he was somewhere else, engaged somewhere else. He was not attentive towards yourself. So if you want to have an effective mode of teaching and learning process, then it is necessary that the student must be attentive in the class. Do you agree with this statement or not, sir? The student must be attentive in the class for effective learning and teaching. Yes, sir. Then the question arises, how to attract the attention of the students towards ourselves, towards our lecture during online interaction. Offline interaction, we do have a lot of mechanism.
उसके नाम लेके पुकार लेंगे, उसको दिखा लेंगे, उसको खड़ा कर लेंगे, भाई कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, उधर देखो, लॉट ऑफ बिकॉज वी आर यूज्ड टू टीचिंग। किसी का माइक्रोफोन, तो फिर रहमान साहब आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो प्लीज। ओके सर, थैंक यू। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि फेस टू फेस मोड में डू हैव लॉट ऑफ मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स आवरसेल्फ, बट हियर इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग हम ये काम कैसे करेंगे, दैट इज ग्रेट चैलेंज, दैट इज ए मेजर चैलेंज in online mode of teaching to keep all the 75 students in this case, or in any kind of online interaction, to attract the attention of all the participants towards itself, so to keep the attention of the learner or listeners towards yourself during the whole period of interaction. This is a challenge, this is a great challenge in online mode of teaching. तब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, now we are coming to that sir. तो उसके लिए सर डॉक्टर शफीउर रहमान साहब, योर माइक्रोफोन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके सर, शफीउर रहमान साहब आपका माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया, उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर, खैर हम लोग बात कर रहे सर कि हाउ टू मीट आउट दिस चैलेंज। उसके लिए हम जस्ट आप गिवन चैलेंज क्या है सर, क्या चैलेंज है, क्या बात है अभी सर, क्या बात हुई थी कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में आप ऑडियंस का मतलब है कि स्टूडेंट का ध्यान अपने तरफ कैसे आकृष्ट करेंगे, आकृष्ट का मतलब कैसे आप अपने तरफ, हाउ यू कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स योरसेल्फ so that the student remain attentive during the whole session of the lecture, and if it happens then the teaching and learning process will be effective. तो ये प्रॉब्लम है सर, कैसे करना है, ठीक है सर। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट क्या लोगों ने, एंड दे हैव रिपोर्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू द ऑडियंस, एंड द एक्सपेरिमेंट सेज दैट इफ यू गो टू द क्लास and give some lecture in the lecture mode. lecture mode का मतलब you go to the class, आपका 30 मिनट का या 50 मिनट का लेक्चर है, you go to the classroom and give a lecture in the lecture mode. lecture mode का मतलब सिर्फ आप लेक्चर देते हैं, जो भी आपको पढ़ाना है लेक्चर मोड में आपने पढ़ा दिया. You are not using any PPT, you are not using props, you are not using any model to explain the concepts you are trying to explain to them. So simply you go to the class, deliver a lecture and come out of the class. Then it has been found that the memory retention of the students is around 20 to 25%. कहने का मतलब ये है 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब उससे पूछा गया कि सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, तो हार्डली दे कैन रिकॉल 20 to 25% of the content which you have delivered in the class in the lecture mode. सर क्लियर है यहां तक बात, समझ में आ रही है तो बताइएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Yes sir, absolutely. Yes sir. Okay, fine. So now come to the next. Another experiment was conducted, and that it was seen that if a teacher is using PowerPoint presentation or any presentation, he is taking help of some props, models, or some maps during his class, then it has been found the memory retention goes beyond 50 to 60%. So I mean to say, if the teacher is showing some props in the class, some models in the class to explain the concept he is trying to explain in the class. Say for example, he is trying to explain the student North Pole, South Pole, where does Japan exist, where does Malaysia exist, उसके लिए ग्लोब से पढ़ा रहे हैं, वहां पर ग्लोब दिखा रहे हैं, है ना, इस तरह का प्रॉप. Even somebody in the class is using PPT presentation, PowerPoint presentation, and some models they are explaining, to explain something they are using models in the class, then it has been seen that the memory retention of the student goes beyond 50 to 60%. तो 10 दिन के बाद जब पूछा गया इस तरह के बच्चों से, तो देखा कि वो 50 से 60% कंटेंट को समझ भी पा रहे थे, रिकॉल कर पा रहे थे और उसको बता भी पा रहे थे, ठीक है? Another experiment was conducted that if a teacher is using quality video, just mind the word quality, we will explain this thing in the latter part of the discussion. If a teacher is using quality video or simulation to explain certain concepts in the class, then it has been found
that the memory retention goes beyond 90%. आपने अगर बहुत क्वालिटी वीडियो दिखाया आपने क्लास में, उसके मदद से आप पढ़ा रहे हैं, किसी सिमुलेशन के मदद से आप पढ़ा रहे हैं, and you are trying to explain the concept with the help of these videos or simulations, then it has been found कि लड़के उसको बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं और उनका मेमोरी रिटेंशन गोज बियॉन्ड 90%. वो 90% तक की बातों को रिकॉल कर पाते हैं, बता सकते हैं कि सर ने ये पढ़ाया था. So with this experiment, sir, it is established that if you are using quality video or simulation in your teaching, then they have the capability or they have the potential of making your teaching or learning process more effective. अगर 90% लड़का समझ रहा, 90% तक रिकॉल कर पा रहा, तो then it is effective teaching and learning process. है या नहीं सर ऐसा? Sir, I am asking from you. Yes, sir. Yes, sir. All of us might have experienced all these things. कोई नई बात अभी तक मैंने नहीं की है. ये सारी वैसी चीजें हैं जो एज ए टीचर वी हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अवर सर्विस पीरियड. हम लोगों ने, सभी लोगों ने इसको हम लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि ये है कि अगर हम क्लास में वैसा करते हैं. अच्छा, ठीक है. Yes, there is a please. request that you please have a PPT in full screen. Could it be possible? Right now I am not taking help of the PPT. मैंने ऐसे PPT Okay. खोल दिया. हमारी अभी सिर्फ बातचीत चल रही है. जब PPT की बात आएगी, I will make it full screen. No issue. All Okay? right. All right. Thank you. Right now just I am talking to you. Fine? Thank you, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, before I start the PPT, basically I am just trying to agreeing on some terms basically. तो हमारा जब एग्री कर जाएंगे एक टर्म पे, then we'll start our PPT. तो वही अभी मैं प्रोसेस में हूं सर. अभी राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सम एग्रीमेंट, जब रीचिंग टू एग्रीमेंट विद यू पीपल. अच्छा सर, एक चीज और समझ, आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इफ द टीचर इज टीचिंग विद द हेल्प ऑफ सम पीपीटी और सम ग्राफ, सम मैप्स, सो द मेमोरी टेंशन गोज बियॉन्ड 50 to 60%. कहने का मतलब बच्चों को याद होता है. जस्ट टू स्ट्रेंथन माय स्टेटमेंट, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. Say for example, a 2 to 3 years child is there, 2 से 3 साल का बच्चा है, and he has not seen elephant in his or her lifetime. अभी elephant उसने नहीं देखा है सर, ये हाथी कैसा होता है. And his father is trying to explain him how does an elephant look like. 2 साल से 3 साल का बच्चा है, उसने अपनी अभी लाइफ टाइम में एलिफेंट नहीं देखा है कहीं, और उनके फादर कोशिश कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट, एलिफेंट का कॉन्सेप्ट देने का कि हाउ डज बेटा, डू यू नो एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल, दे हैव द लेग 4 legs एंड ईच लेग इज लाइक राउंड पोल्स 10 feet हाइट. सो इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि उनको बताएं. एंड इट हैज पास 2 days टाइम. डू यू थिंक, एंड द फादर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट बाय लेक्चर मेथड, सिर्फ समझा रहे हैं. 2 दिन तक उन्होंने देखा कि हाथी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसके मन में नहीं हुआ. तीसरे दिन उन्होंने, किसी ने कहा कि he just discussed with his friend कि भाई I am trying to make it convince how does an elephant look like, लेकिन मेरा बेटा समझ ही नहीं पा रहा है कि हाथी कैसा दिखता है. तो बोला कि why are you wasting your time, why don't you just show him a photograph of elephant. तो बोला अच्छा, good enough. नेक्स्ट डे वो एक छोटा सा एलिफेंट का फोटोग्राफ लेके गए, दिखा दिया. बच्चे ने भी कहा बाबा यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 days टाइम, यही पहले दिन दिखा देते हैं, हम समझ गए हाथी कैसा, कोई भी बात पूछो हम हाथी के बारे में पूरा बता देंगे. सो जस्ट सी हियर द पावर ऑफ एन इमेज सर, है ना. इसीलिए कहते हैं कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. एक पिक्चर आपने दिखा दिया, एक पिक्चर की मदद से आपने पढ़ाई कराई, यहाँ पर समझाने की कोशिश की, उसके समझ में सब आ गया. बोला आप आपसे कुछ भी हाथी के बारे में पूछ लीजिए कि उसका लेग्स कैसा होता है, ट्रंक कैसे होते हैं, ईयर्स कैसे होते हैं, आई विल एक्सप्लेन और आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन just by seeing or watching a picture of an elephant. You just see the power of these images, I mean to say picture का power देखिए in teaching and learning process में. Another thing, nowadays all of us or might have noticed that कि छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा दूध पी रहा हो, बच्चा छोटा बच्चा 6 महीने 8 महीने 10 महीने का, साल भर का, 2 साल का, आजकल घरों में एक ट्रेंड हो गया सर कि बच्चा रोने लगता है, हम लोग उसको क्या दे देते हैं सर, क्या पकड़ा देते हैं उसके हाथ में तुरंत, मोबाइल. देखिए सर, ये सभी लोगों ने वॉच किया हुआ है. अच्छा, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखिएगा सर, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कभी कि बच्चा अभी ABCD क्या कुछ नहीं जानता है, वो 1-1.5 साल का बच्चा है, यू लगा के अपना यूट्यूब लगा लेता है अपने पसंद का, अब कार्टून चैनल लगा लेगा. अच्छा, अब कार्टून चैनल लगाया, उसके बाद उसका चेहरा देखिए,
अब वो हंस भी रहा है, उसके चेहरे पे तरह तरह के भाव आ रहे हैं, लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस आर हैपनिंग ऑन हिज फेस, है ना, वो देख भी रहा है, खुश हो रहा है, सब भूल गया, वो रोना चीखना भूख दूध सब भूल गया। अच्छा, बीच में थोड़ा सा मोबाइल उससे खींचिए आप, फिर रोने लगेगा, फिर दूध दो, ये फलाना दो करो, जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में दे दीजिए फिर वो अपना है, और उसमें वो मगन हो जाता है। मगन का मतलब है कि वो उस वीडियो को देखने में क्या होता है सर, बहुत ध्यान मग्न हो जाता है ना, बिल्कुल तल्लीन, जिसको कहते हैं तल्लीन हो जाता है, खूब देख रहा है ध्यान से उस वीडियो को। अच्छा, अगर वीडियो का, अच्छा वो कब तक देखता रहता है, जब तक वो अब खत्म ना हो जाए। अच्छा, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, बीच में ऐड आता है तो वो क्रॉस वाला साइन को दबा देता है, ऐड खत्म भी हो जाता है, फिर वो अपना देख रहा है मजे से, और जब वो खत्म होगा फिर अगला वीडियो को लगा लेता है। तो दैट वीडियो हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स इटसेल्फ। और वो बच्चा 5 मिनट देखता है, उसका दूध भी भूल जाता है, अपनी सारी मुसीबत सब भूल गया वो, और वो उसी में मगन हो गया, ही इज हैप्पी वाचिंग दैट वीडियो। इसी को कहते हैं सर क्वालिटी वीडियो। तो इस तरह का अगर वीडियो होगा, देन बी श्योर दैट योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस विल बी वेरी efficient. Are you getting this point, sir? Do you agree with this presumption or not, sir? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम सब बात से आपके एग्री करते हैं, लेकिन आप बताइए मुझको कि इस तरह का क्वालिटी वीडियो जो आप बोलते हैं जिसको, ये कौन बनाएगा? We are not used to of this kind of thing. We as a teacher, I am master of physics, I may be master of economics, I may be master of history, master of commerce, master of law, master of education, but I haven't been trained to make quality video. ये हमारा काम भी नहीं, हम कैसे बनाएंगे इसको? और आप बोलते हैं कि नहीं, क्वालिटी वीडियो अगर आप बनाएंगे तो टीचिंग एंड लर्निंग, वी एग्री। और इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए सर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जस्ट आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि ये जो क्वालिटी वीडियो होते हैं, हाउ पावरफुल दे आर इन मेकिंग आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। जस्ट सी हियर, हम सभी लोगों ने सर देखा होगा कि हाउ डज ए ह्यूमन हार्ट वर्क, हाउ डज ए ह्यूमन हार्ट वर्क्स। ऐसा जो है हमको छठा क्लास में भी पढ़ाया जाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, फिर 9th में भी पढ़ाया जाता है, 9th 10th में भी, फिर आप अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, सब जगह ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अब देखिएगा कि क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को याद होगा कि जब बायोलॉजी के टीचर क्लास में आते थे तो दे वेर वेरी गुड इन ड्रॉइंग पिक्चर इन द बोर्ड्स। तो वो 2-3 कलर का सर चौक लेके आते थे, और सिर्फ फॉर एग्जांपल कि वो पढ़ा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो वो हार्ट का बहुत अच्छा पिक्चर बनाते थे और वो दिखाते थे कैसे, देखिए दीज आर द आर्टरीज, यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चैम्बर पे पहुंच रहा है, राइट चैम्बर से देखिए कैसे लंग्स में जाता है, और लंग्स के बाद वहां ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड, और फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट चैम्बर में आता है, और वहां आयता के थ्रू फिर पूरे बॉडी में प्रवाहित हो जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम वो बड़ा अच्छा बनाते थे। डू यू हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दैट सर? आपके बायोलॉजी टीचर का कुछ याद आ रहा है स्कूल डेज का आप लोगों को? कुछ अगर याद आ तो बताइए सर। पुराने लोग जो होंगे उनको मालूम होगा, नए लोगों ने तो सब पीपीटी में देखा होगा। ऐसा कुछ याद है? डू यू रिमेंबर एनी सच काइंड ऑफ थिंग सर? सर जी, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। कुछ याद है सर इस तरह का बायोलॉजी टीचर का कुछ या नहीं? वेरी वेल सर। ऐसा होता था कि नहीं होता था? वेरी गुड, है ना? अच्छा, अब उसमें क्या होता था कि ठीक है चलिए, उनका बहुत सारा टाइम तो वो चित्र बनाने में निकल गया, मैप बनाने में निकल जाता था, है ना, फिर एक्सप्लेन कर, स्टिल इट वाज मोर इफेक्टिव। सिर्फ अगर आदमी लेक्चर दे दे, उससे अच्छा ये बना के बता दे तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, बोर्ड पे जो पिक्चर बना के दिखा दिया जाता था। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क और हाउ डज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क, ये चीज दिखाने के लिए हम आपको एक चीज सर दिखाते हैं। यहाँ पर मेरा गूगल का स्क्रीन दिख रहा है आपको सर? यस सर, इट इज विजिबल। आपने लिखा सर हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क्स, मान लीजिए हमने ये लिखा सर, तो देखिए सर हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क लिखा, कुछ चीजें आगे, हम पहला ही वाला ले लेते हैं सर, द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्क्रीन विजिबल होगा तो जरा बताइएगा सर, अगर नहीं होगा तो बताइए। दोनों चीज दिख रहा सर? विजिबल है सर। मैंने इसको क्लिक किया, एक वीडियो, देखिए ये वीडियो है, इसमें हार्ट जो है यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, पूरे बॉडी पे ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये दिखाया गया है सर, विद द हेल्प ऑफ ए 2 to 3 मिनट्स वीडियो है, छोटा सा एक, इसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें 2 कलर सर आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर एंड रेड कलर। इज इट विजिबल? हाँ या ना में बताएं सर। यस सर। तो ब्लू कलर में दिखा रहा है कि पूरे बॉडी से ब्लड जो है ना,
माने वो सर्कुलेशन के बाद कैसे वापिस हार्ट में आता है। तो हार्ट में ब्लू कलर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट में आया राइट हैंड साइड पे। उसके बाद देखिएगा ये ब्लू कलर का जो ब्लड है ये चला जाता है लंग्स में, है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वहां दोबारा ये ऑक्सीजन ले लेता है अपने साथ, यानी ऑक्सीजनेट हो जाता है, जिसको हम लोगों ने रेड कलर में दिखाया हुआ है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है लेफ्ट चेंबर में हार्ट के, और वहां से फिर पंप होकर के आयटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। फिर पूरे बॉडी में गया, वहां से बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिल गया का मतलब जो ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन व्हिच वाज बीइंग कैरिड बाय द ब्लड, वो खत्म हो गया, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, ब्लू ब्लड। फिर ब्लू ब्लड अगेन कम्स टू द राइट चेंबर ऑफ द हार्ट। राइट चेंबर से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स पे ऑक्सीजनेट होगा यानी ऑक्सीजन लेगा, और फिर लेफ्ट चेंबर में आएगा और आयटा के थ्रू बॉडी में चलेगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन, है ना, कंटिन्यूअसली। दिस इज नोन एज, देखिए सर ये राइट हैंड साइड हार्ट का दिखा रहा है, अभी मैं चला इसको प्ले करके दिखाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। और लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है ना। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के कौन से चेंबर में आ रहा है सर, बताइएगा सर, थोड़ा बताइएगा तो हम समझ पाएंगे, आप देख पा रहे हैं नहीं, किस चेंबर में आया हार्ट के, राइट साइड। राइट साइड। वेरी गुड सर। और यहां से देखिए राइट साइड के बाद से, देखिए राइट साइड के बाद देखिएगा सर ये कहां जा रहा है सर, देखिएगा थोड़ा सा राइट साइड के बाद देखिए सर, ये ब्लू वाला जो ब्लड आया ये राइट साइड कहां जा रहा है सर, देखिए तो कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये कहां जाता हुआ दिख रहा है, देखिए ब्लू ब्लड कहां जा रहा है, बोलिए आप। लंग्स में। लंग्स में जा रहा है, वेरी गुड। और लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वहां से ये पिकअप ऑक्सीजन पार्टिकल्स, यहां से ऑक्सीजनेट हो गया रेड। और ये रेड ब्लड देखिए फिर कहां पर आ रहा है सर, अब रेड ब्लड कहां पर आता है, लेफ्ट चेंबर में। और लेफ्ट चेंबर में यहाँ आयोटा के थ्रू फिर पूरे बॉडी में संचारित हो जाता है। तो अगर आप इस तरह के वीडियो के माध्यम से इस चीज को पढ़ाएंगे, that your teaching and learning process will become more interesting for the student as well as it will become more effective for the student। अब थोड़ा सा मैं इस वीडियो को सर चला के दिखाता हूं, 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए। तो सर आपने देखा इस वीडियो को, सर कुछ देखा आपने? यस सर। तो ये कभी भी बैठ में यूट्यूब में है, मैंने देख लिएगा, गूगल पे मैंने किया सिंपली, है ना, हाउ डज योर ह्यूमन हार्ट वर्क, ऐसा करिएगा आ जाएगा, ये कोई नहीं है ना। तो आपने लीजिए टाइम पे देखिए। आई मीन टू से, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के वीडियो के माध्यम से, इफ यू आर performing your teaching with the help of such kind of videos, then your teaching and learning process will become more interesting for the student as well as it will become more effective। Do you agree with this statement sir or not? यस सर। पढ़ाएंगे बस सर, ठीक है। मैं इतनी ही बात करना चाह रहा था इस सिलसिले में आपसे। तो अगर ऐसा है तो फिर अब सवाल उठता है कि ठीक है सर,
लेकिन हु विल मेक ऑल दीज थिंग्स फॉर अस? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि ठीक है, इस तरह के वीडियो हमको थोड़ी बनाना आता है, ठीक है हम बता देंगे देखो ऐसे ऐसे बनाओ, लेकिन हमको बनाना नहीं आता वीडियो वगैरह इस तरह का, बिकॉज वी हैव नॉट बीन ट्रेन फॉर ऑल दीज थिंग्स, वी आर नॉट ट्रेन फॉर ऑल दीज थिंग्स, ना तो हमको इस तरह की कोई ट्रेनिंग है। हाँ, हम बता सकते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा बना दो, तो लड़कों को समझने में आसानी होगा। तो इसी चीज को, इसी जरूरत को गवर्नमेंट ने समझा और उन्होंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसको हम लोग कहते हैं ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट में व्हाट दे डिड बेसिकली, दे हैव इनवाइटेड 4000 टीचर्स फ्रॉम 70 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। इंडिया के 4000 सब्जेक्ट एक्सपर्ट को उन्होंने जमा किया इन स्टूडियो एट चेन्नई, और वहां पर दे वेर प्रोवाइडेड ऑल सॉर्ट ऑफ टेक्निकल हेल्प। वहां पर टेक्निकल प्रोफेशनल बना गया, उनसे कहा गया कि डॉक्टर साहब आप टीचर हैं, आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल इनपुट देना है, बताना है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, बाकी वो वीडियो बनाने का काम अगर हो या कुछ सिमुलेशन बनाने का काम हो, जो भी आप होगा वो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारा रहेगा, कैमरामैन है, एडिटर है, एंड ऑल दीज पीपल्स आर देयर, दे विल प्रोवाइड यू ऑल नेसेसरी हेल्प इन मेकिंग ए क्वालिटी वीडियो। आप एक क्वालिटी वीडियो आप बना सकते हैं, एंड ऑल सच काइंड ऑफ वीडियोज आफ्टर preparing all such kind of videos, they were put on a repository on the internet which is known as EPG पाठशाला। एक रिपोजिटरी में इंटरनेट पे रख दिया गया, and that was freely available for the student and teacher for teaching and learning process. They can use it, they can visit these sites, they can see these videos and learn from these videos. So this project was known as EPG पाठशाला. I will discuss this project later on. See here some results over here. अब हम इस रिजल्ट की थोड़ी सी बात कर लें, क्या लिखा हुआ। ठीक है सर, लिखा हुआ है ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये बात हमने कर ली सर, अभी दिखाया था एलिफेंट का एक पिक्चर, ठीक है सर, बताया था ना इसको करने के लिए कि कभी हाथी का छोटा सा पिक्चर आपने दिखा दिया एलिफेंट का, तो लड़का तुरंत समझ गया उसका। यही चीज यहाँ भी होती है। डू वीडियोज इंप्रूव लर्निंग? अगर वीडियो के को दिखाने से लर्निंग इंप्रूव होता है या नहीं, एक सवाल है। तो देखा गया इन रिसेंट सर्वे 92% ऑफ स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट वीडियोज, क्वालिटी वीडियोज हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देयर एजुकेशन। इट हैज बीन फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है सर, वीडियो से मैं समझ में आता है कि चीजें आसानी से समझ भी जाती हैं। अभी जैसे कि मैंने आपने भी एग्री किया कि हाँ सर, ये अगर वीडियो दिखा दिया जाए तो बजाय इसके कि हम रक्त संचरण सिस्टम पढ़ा रहे हो, प्रणाली पढ़ा रहे हो, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हो, उसको कितना भी अच्छा से पढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो दिखा दीजिएगा 2 मिनट का वीडियो, तुरंत समझ में उसको आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक बातें ठीक है सर, आगे ठीक बढ़े। है। अच्छा, हाँ सर। studies have shown that use of short video clips allows for more efficient processing and memory recall. अच्छा, ये भी दिखाया गया, रिसर्च से पता चला स्टडी से, कि ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए। लंबा वीडियो में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को बहुत देर तक केंद्रित नहीं रख पाता है, वहां पर कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता है ना। तो अगर छोटा वीडियो है 10 मिनट का हो, 12 मिनट का हो, दैट्स गुड इनफ, है ना। इवन चलिए 20-25 मिनट तक चलेगा, उससे लंबा वीडियो कर दीजिएगा तो वो उतना नहीं अपने आप को कंसंट्रेट कर पाता है। तो छोटा वीडियो रखिएगा तो वो देर तक देख भी लेता है, अच्छा 10 मिनट का है, देख लिया उसने, समझ भी लिया, ये होता है। तो स्टडीज हैव शोन दैट द यूज ऑफ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड मेमोरी रिकॉल। द विजुअल एंड ऑडिटरी सब तो खाली आपने देख लीजिएगा, इस पढ़ लीजिए। Achha, so videos have become an important part of higher education. It is integrated as part of traditional courses and serves as cornerstone for many blended course and is often the main. अच्छा चलिए, अब क्वालिटी वीडियो के सर एक और एग्जांपल देकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। The people, many of us are watching some movies सर। हम लोग फिल्म देखते हैं सर, फिल्म बहुत सारे देखते हैं। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं which you might have seen 20 years back, और अभी तक उसके बहुत सारे सीन, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे डायलॉग्स आपको याद होंगे जो कि आपने 20 साल पहले देखा है। और कुछ फिल्में जो आपने रिसेंट पास्ट में देखी, उसका नाम तक आपको याद नहीं होगा। डज इट हैपन सर और नॉट? बताइए सर। यस सर। तो सर ऐसा होता है, ऐसा तो जरूर होता है, क्योंकि हाँ, साइकोलॉजिकली वेदर यू टेक इट एज इंसिडेंटल मेमोरी और फ्लैश बल्ब मेमोरी, तो एग्जैक्टली, फ्लैश बल्ब मेमोरी में इट इज बहुत नेचुरल, वो तो देर पर रहेगा ना याद आदमी को। हाँ बिल्कुल। और उसका दूसरे कारण भी साइकोलॉजिकली इट इज फ्लैश। एग्जैक्टली सर, उसका दूसरा कारण भी है सर। से फॉर एग्जांपल, किसी भी, मैंने आई एम जस्ट नॉट बायस्ड टू एनी मूवी, शोले मान लीजिए फिल्म थी, कभी मान लीजिए कभी शोले है, मुगल आजम है, बहुत अच्छी फिल्म, या मैंने प्यार किया, कुछ बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज आपने बहुत पहले देखा होगा। तो उस मूवी के अभी भी आपने उसको हो सकता है 20 साल पहले, 25 साल पहले देखा हो, उसके बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी अभी भी याद होंगे आपको, या आपकी मेमोरी पे वो छाप छोड़ जाता है सर, है ना। तो वो अभी होगा।
उसके बाद कभी कभी हमने बीच में 50 मूवी देखी होंगी, उसके बहुत सारा सीन भी हमको याद नहीं है। हम लोग लेमन टर्म में बोलते हैं सर कि कुछ फिल्में बहुत फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ फिल्में बहुत सुपर हिट कहलाती हैं सर। सुपर हिट हो गई फिल्में, बहुत सक्सेसफुल होती हैं। तो जो फिल्में सुपर हिट होती हैं, जरा सा उसका एनालिसिस कीजिए सर, क्या होता है। नो डायरेक्टर मेक्स ए फिल्म टू गेट इट फ्लॉप। कोई भी आदमी फ्लॉप होने के लिए फिल्में नहीं बनाता है। चलिए, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन कि उस फिल्म में कुछ कमी रह गई, क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि जो सुपर हिट फिल्में हैं, आप इफ यू गो टू द मूवी हॉल टू वॉच दिस फिल्म्स, तो जैसे आप जाएंगे, कैसे 3 घंटा या 2.5 घंटे जो भी फिल्म का ड्यूरेशन है, 2 घंटे कैसे गुजर जाता है आपको पता नहीं चलेगा। while watching that movie you get involved into that picture. माने वो मूवी, that movie has the capacity to attract your attention towards itself. जब आप बैठते हैं वहां देखने के लिए, तो दैट मूवी इतने अच्छे ढंग से वो बनाए गए हैं, उसके सीन एक दूसरे से इतने अच्छे ढंग से क्लिप किए गए हैं, पिरोए गए हैं, कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किए रहता है, और 2 घंटा कैसे गुजर गया आपको पता नहीं चला। While in other category of moving which gets flop, आप जाते हैं किसी कारण बस, ड्यू टू द फेलियर ऑफ डायरेक्टर, ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टोरी टेलर, कुछ भी हुआ कि वो फिल्म आपका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने में सफल नहीं होता है। अगर सफल नहीं हुआ तो 10 मिनट के बाद भी आपको लगने लगेगा कि क्या बकवास मूवी है, क्या है, नहीं है, और आप यू कम आउट ऑफ द मूवी। आधे घंटे के बाद आप बाहर आ गए, दूसरे से बता रहे मत जाना यार, वो सरदर्द मूवी है, बहुत कुछ नहीं समझ में आता, क्या है नहीं है बने। तो हो क्या रहा सर, अगर दोनों का अंतर देखिए आप, तो एक मूवी वैसा था दैट हैज द क्वालिटी टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दूसरे वाले में दैट मूवी फेल्स टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग 2.5 आवर ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। ये फर्क है दोनों में। तो जो मूवी या जो वीडियो, मूवी इज नथिंग बट ए वीडियो सर, ऑडियो वीडियो थिंग्स, वीडियो है वो, तो वो वीडियो, जो वीडियो आपका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सके वो इफेक्टिव है, उसकी चीजें आज तक आपको याद रहती हैं। तो अगर वैसे ही हम अगर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आ जाएं और एक ऐसा वीडियो बनाएं दैट वीडियो is capable of attracting your attention towards 8 minutes, 10 minutes or 20 minutes time, तो surely it will be an efficient teaching and learning process। और दूसरे केस में जहां पर वो वीडियो किसी वजह से ध्यान आपका आकृष्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर ध्यान ही नहीं आकृष्ट कर रहा, तो बच्चे सुन नहीं पा रहे, सुन नहीं तो लर्निंग नहीं होगा ठीक से, लर्निंग नहीं होगा तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस विल नॉट बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होगा सर। ठीक है सर, यहां तक बात। तो अब बात आती है सर कि कैसे क्वालिटी वीडियो हम बनाएं। तो हमने अब आपको एक एग्जांपल बताया था क्वालिटी वीडियो का, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस चीज को महसूस किया कि नहीं साहब, वीडियो में तो कैपेबिलिटी है, अगर क्वालिटी वीडियो है तो, एंड इफ दिस वीडियो इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द attention of the students for 20 minutes, 30 minutes, so whatsoever duration of the video is there, then we can have effective teaching and learning process। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसी के लिए उन्होंने 4000 शिक्षक को, मैंने आपसे बताया कि they have invited 4000 subject experts from 70 belonging to 70 subjects from all across India, and they have invited them to a studio of Chennai where they were provided all sort of technical support to make quality videos। और वहां पर उन लोगों ने लगभग 30,000 वीडियोस प्रोड्यूस किए। कितने वीडियो प्रोड्यूस किए सर? 30,000 वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। याद रखिएगा, अलग अलग टॉपिक पे, एक टॉपिक पे उन्होंने 10 से 15 मिनट का लेक्चर दिया, किसी ने 20 मिनट का लेक्चर दिया, इस तरह करके 30,000 टॉपिक्स पर अलग अलग लेक्चर वहां मौजूद हैं, एंड दैट इज अपलोडेड ऑन द इंटरनेट। और एक रिपोजिटरी में है, दैट रिपोजिटरी इज नोन एज ईपीजी पाठशाला, उसको हम लोग कहते हैं सर ईपीजी पाठशाला। तो ये देखिए सर, ईपीजी पाठशाला में 70 सब्जेक्ट के मोर देन 4000 टीचर्स को या एक्सपर्ट्स को एडवाइस किया, और वहां पर दे वेर प्रोवाइडेड ऑल टेक्निकल सपोर्ट्स, एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन 30,000 वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, एंड दीज लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन द, कहां पर है सर, अपलोडेड ऑन द इंटरनेट। हम आपको सर गूगल पे चल के दिखा देते हैं कि वो कहां पर है पहले। तो सर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल स्क्रीन सर विजिबल है सर, आपको बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा, मैंने गूगल स्क्रीन दिख रहा हो तो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ईपीजी पाठशाला, सिंपली लिखें ईपीजी पाठशाला, है ना, एंड यू कैन सी हियर द फर्स्ट लिंक ईपीजी पाठशाला। द मोमेंट यू विल क्लिक इट, ईपीजी पाठशाला, दिस इज द होम पेज ऑफ ईपीजी पाठशाला। आई एम जस्ट गिविंग यू द लाइव डेमो, यही हमारे प्रेजेंटेशन में भी था, है ना। अब इसमें देखेंगे सर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, several ebooks are there, several online courses are there, and some offline access are there। What I wish to show you is that you just see here uploaded
लेक्चर्स। देखिए सर कितने हैं, एडल्ट एजुकेशन पे 190 टॉपिक्स पर, वेरियस टॉपिक्स पर लेक्चर मौजूद है। ब्रैकेट वाला दिखा रहा है कि हाउ मेनी लेक्चर्स आर देयर ऑन वेरियस टॉपिक्स। इसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री पर कितने टॉपिक पर है सर लेक्चर, आप देख पा रहे हैं 220 टॉपिक्स पर। सिमिलरली इफ यू टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, सो वी डू हैव video lecture on 530 topics. Similarly, forensic science, we do have lecture on 560 topics. If you are talking about home science, तो यहाँ पर देखिए सर 640 640 डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर मौजूद है। बोले इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे सर, तो लेट मी क्लिक, हमने होम साइंस को सर क्लिक किया तो ये जस्ट सी हियर सर, ये होम साइंस दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, किसी भी पेपर में पेपर्स होते हैं, ये बहुत सारे पेपर है सर, देखिए रेसिडेंशियल स्पेस डिजाइनिंग, डेकोरेटिंग द इंटीरियर्स एंड लाइक दैट, बहुत सारे पेपर्स हैं ये। तो मान लीजिए कि हम इस पे किसी डेकोरेटिंग द इंटीरियर्स देखते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ डेकोरेटिंग द इंटीरियर्स पे 40 टॉपिक्स पर लेक्चर मौजूद है। ठीक है, इसको क्लिक किया मैंने तो देखिए सर ये मॉड्यूल आ गया और इस पर देखिए 40 टॉपिक्स पर लेक्चर मौजूद है, देख रहे हैं सर। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इंडोर प्लांट्स कुछ लिखा हुआ है यहाँ, इसमें क्या है देखते हैं हम लोग इंडोर प्लांट्स। तो देखिए सर यहाँ पर इंडोर प्लांट्स पे चीजें आ गई सर। तो अब देखिए सर क्या क्या इसमें है वो देखिएगा जरा सा। तो सबसे पहले तो हमने देखा था आपको कि ये होम साइंस पे एक टॉपिक था डेकोरेटिंग द इंटीरियर्स, वहां पर हम लोगों ने लिया है टॉपिक क्या, इंडोर प्लांट्स। तो देखिए सर इंडोर प्लांट्स पे सबसे पहले जो स्टूडेंट को देखने को यहाँ मिलेगा वो क्लास नोट्स मिलेंगे, यानी टीचिंग मटेरियल मिलेगा या रीडिंग मटेरियल्स मिलेगा, है ना। तो देखिए इंडोर प्लांट्स पे इसको नोट्स कह लेते हैं आप। तो देखिए ये पूरा रीडिंग मटेरियल है, व्हाट इज इंडोर प्लांट्स, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, हिस्ट्री ऑफ इंडोर प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ इंडोर प्लांट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जितनी बातें वीडियो में हैं वो सब बातें सर यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में स्टूडेंट को मिल रही है। ठीक है सर, तो स्टूडेंट को ये नोट्स मिल गया जिसको हम लोग ई टेक्स्ट बोलते हैं। आप देख रहे हो सर लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का ई टेक्स्ट लिखा हुआ रहा, मीन्स द स्टूडेंट कैन डाउनलोड दिस पेपर, डाउनलोड दिस फाइल, can take a printout of this file and can use it as a reference material or teaching material. Is it clear sir? बोलिए सर, बोलिए कुछ बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद सर हम आएंगे Yes, लर्न sir. मोर, है ना, लर्न मोर। इफ द स्टूडेंट वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इंडोर प्लांट्स, यहाँ पर कुछ और रिसोर्सेज के नाम दिए गए हैं। इफ द स्टूडेंट्स आर, है ना, इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट दीज टॉपिक्स, दीज आर द वेब लिंक्स where the student can get more information about these topics. And after that we have the self learning. सेल्फ लर्निंग का मतलब देखिए यहाँ पर एक वीडियो अब है, यहाँ पर है देखिए वीडियो, इसको चला के देखिए तो ये लगभग 24 मिनट की वीडियो है। The video is visible to all of you, sir? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए कि प्रोफेसर Loganaki is there and she is giving lecture on this topic with the help of some audio video presentations over there. और ये जो पूरा वीडियो बनाया गया है वो with the help of technical प्रोफेशनल की मदद से ये बनाया गया है और यहाँ पर अवेलेबल है and that is uploaded and it is available free of cost on the internet. Anybody can see it and can be benefited from these educational videos, and they are known as OER, Open Educational Resources, and EPG Pathshala is one such resource. There are so many open resources, open educational resources. EPG Pathshala is one of them, है ना। तो हमने एक आपको इसमें बताया। तो आप देख रहे हैं जो भी इस तरह का सिमुलेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, ये सब जो है इसमें सिर्फ मैडम ने बता दिया कि हमें ये काम करना है, कैसे हो रहा नहीं हो रहा ये सब टेक्निकल एक्सपर्ट ने करके उनको बता दिया, एंड हिज और हर लेक्चर इज कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर और इट इज बीइंग अपलोडेड ओवर देयर। सर यहाँ तक बातें क्लियर है, आपको समझ में आ रही सर कि नहीं समझ में आ रही, सो बताइए सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सर एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का जिसको हम लोग कहते हैं ईपीजी पाठशाला। अब थोड़ा सा आपको जब भी टाइम मिले तो ईपीजी पाठ बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर हमने तो एक दिखा दिया था, है ना। अब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आप है, किसी में भी जाकर के आप देखिएगा। से फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे देख सकते हैं, किसी पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखना चाहते हैं
सो मेनी टॉपिक्स पर है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड्स पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो देखिए, प्रोफेसर साहब का है, ह्यूरिस्टिक सर्च की बता रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो आप अपने पसंद का वीडियो यहाँ पर जो भी चाहे आप देख सकते हैं सर, है ना। तो ये सब जितने भी प्रेजेंटेशन है, सिमुलेशन है, ट्रांजिशन है, ये सब सब किन्होंने बना के दिया, सब टेक्निकल एक्सपर्ट ने दिया। और टीचर तो सिर्फ ये कर रहा है कि आप उसने इंटेलेक्चुअल इनपुट आपने दिया कि हमें ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, ये चीजें यहाँ पर है। तो ये आप देखिए अलग अलग टॉपिक पे सर, इसमें जरा गौर कीजिएगा। ईपीजी पाठशाला में जैसे एजुकेशन या क्रिमिनोलॉजी या कॉमर्स, तो कॉमर्स पे हाउ मेनी लेक्चर्स आर अवेलेबल सर, कितने लेक्चर है देख पा रहे हैं आप सर? 469 लेक्चर्स हैं ऑन वेरियस टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर ये है लेक्चर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कॉमर्स का एक लड़का किसी टॉपिक पे लेक्चर देख रहा हो एट हिज लीजर टाइम, रात के 9 बजे अपना देख रहा हो, अब उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, वो पूछना चाहता है, तो किससे पूछेगा? दिस फैसिलिटी is not available on EPG Pathshala. If the student is watching a video and he or she has any query in his, her or mind, then there is no hand holding support available for the students. There is nobody available to address the queries of the students in case of EPG Pathshala or in case of OER. Materials are there, written materials are there, class notes are there, okay fine, video lecture is there. But if you do have any query in your mind, there is nobody present or there is no mechanism available in EPG Pathshala to clarify or to address your queries or to address your doubts. Am I clear, sir? Yes, sir. अब अगर लड़का बीच में मान लीजिए 24 मिनट का आपका वीडियो है और 5 मिनट के बाद उसके मन में एक क्वेरी आया, चलिए फिर देखा, 10 मिनट के बाद फिर दूसरा क्वेरी आया, इफ नोबडी इज अवेलेबल टू आंसर द क्वेरीज, तब उसका इंटरेस्ट उस वीडियो में रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताइए। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब ध्यान नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, और जब अटेंशन नहीं है तो फिर वो उसकी टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद OER और EPG पाठशाला। तो जो एजुकेशनल साइंटिस्ट थे इस चीज को समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि भाई अगर लड़के को कुछ पूछना हो, द स्टूडेंट हैज एनी क्वेरी इन द माइंड, तो ऑनलाइन लेक्चर में ये सुविधा होनी चाहिए कि वो उसके, देयर मस्ट बी ए प्रोविजन और देयर मस्ट बी ए फैसिलिटी ऑफ एड्रेसिंग द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट, नंबर 1। दूसरा क्या है सर कि मान लीजिए किसी लड़के ने, हम लोग क्या है, हम लोग काम करते हैं सम इंकरेजमेंट पे, जैसे कि है ना कि कोई भी लड़का छोटा सा भी काम करता है तो आप बोलते शाबाश, वेरी गुड, यू हैव डन वेरी वेल, उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा देने से क्या होता है कि वो इंकरेज होता है और काम को अच्छे ढंग से करता है। यहाँ पर पता चला लड़का 50 अलग अलग टॉपिक पे वीडियो देख लिया, बट देयर इज नो वे ऑफ इनकरेजिंग द स्टूडेंट इन एनी फॉर्म। से फॉर एग्जांपल आप उसको कोई सर्टिफिकेशन दे देते, बोलते कि नहीं भाई आपने 50 देख लिया है, बहुत अच्छी बात है, ये लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि लड़का इंकरेज होता। Such kind of mechanism is not available in EPG Pathshala. There is no provision for certification. Second thing, तो पहला सर, पहला क्या डिमेरिट था कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट। दूसरा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सर्टिफिकेशन। तीसरा सर क्या है कि इसमें जो लेक्चर है वो किसी किसी टॉपिक पर है, दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कोर्स। यहाँ पर 50 टॉपिक पे भी देख लेगा तो उसको ये नहीं मिलेगा कि तुमने 4 क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ऐसा प्रोविजन नहीं है। कोर्स में और टॉपिक में सर अंतर समझेंगे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड ए टॉपिक सर। आई एम टेलिंग ए कोर्स टू दैट पेपर विच यू टीच ड्यूरिंग 1 सेमेस्टर ऑफ योर प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम पढ़ाते हैं उसके एक सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ाते हैं आप सर, समझ रहे मेरी बात सर? कोई पेपर पढ़ाते होंगे आप अपने सेमेस्टर में, बोलिए सर। Yes, sir. वो जो कंप्लीट पेपर है उसको हम कोर्स कहते हैं। तो उस पेपर में एक टॉपिक होता है, 2 होता है, और देयर आर सेवरल टॉपिक्स। क्या होते हैं सर?
यूनिट वाइज सेवरल टॉपिक। हाँ, यूनिट वाइज तो होता है, उन टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट में बांट देते हैं। आई मीन टू से देयर आर सेवरल इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हो, मे बी 20 मे बी 30 डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस। यही तो होता है सर उसमें। Yes, sir. हाँ, so various topics, interrelated topics are there. So interrelated topics, they are structured in some way that we call it as a course. कहने का मतलब है, मान लीजिए कि 20 टॉपिक है उसमें, और उन 20 टॉपिक को लड़का समझ लेता है, पढ़ लेता है, and he or she passes the examination as well, which is based on these topics. Then you give them a certification that okay, you have completed this course of 4 credit by securing 68% of marks. This provision is there in another phenomena which is known as MOOCs, Massive Open Online Courses. तो इसमें जो जो कमियां पाई गई थी उनको दूर किया गया। इस बार ट्राई टू, है ना, एलिवेट दैट demerits which were found in EPG Pathshala or OER, where it was with by introducing a new concept which is known as massive open online courses, which is known as MOOCs. तो बोलिए सर MOOCs क्या होता है? तो now coming back to my presentation. तो देखिए सर MOOCs क्या है? MOOCs stands for massive open online courses. Massive, why it is called as massive? Massive इसलिए इसको कह रहे हैं कि large enrollment numbers are there. I mean to say at any instant of time 20,000, 40,000 students may be enrolled in these courses. That's why it is massive. Open means it is mandatory, no mandatory qualification is there, and it is open for all. इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको 12th पास होना चाहिए या +2 पास होना चाहिए या BA पास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is open for all. Anybody can do these courses. ठीक है? Online, which is fully online, so available 24/7 for the students. And course इसलिए है कि it is structured course content. The topics are structured in such a way that they form a complete course, and once that topics are cleared or passed by the student, it means that the student has passed that particular course, completed that course, I mean to say. So you just see here, if the difference between these two, OER, EPG Pathshala provides e-content in 4 quadrants. अभी आपको दिखाया था मैंने 4 quadrants क्या क्या होता है सर? quadrants बताया था ना कि e-text था, वहां पर दिखाया था ना आपको हमने, e-text होता है, वीडियो होता है ना, और रेफरेंसेस होते हैं, है ना, उसको quadrants कहते हैं. अभी हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे. Where no teacher support or hand holding support for the student is available. ठीक है सर? यहां पर OER के केस में क्या है? नो टीचर सपोर्ट और हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज अवेलेबल. तो डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर है, अगर लड़का देख रहा हो एक टॉपिक पे, उसको कुछ पूछना हो, तो यहाँ पर कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है. अच्छा, यहाँ पर MOOCs क्या है सर? MOOCs में क्या है? वेयर द कोऑर्डिनेटर टीचर इंटरेक्ट्स विद द लर्नर. आई मीन टू से हियर हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज देयर. इफ द स्टूडेंट हैज एनी क्वेरी in his or her mind, there are provisions that queries may be addressed by the teachers. यहां पर क्वेरी एड्रेस करने का एक मैकेनिज्म मौजूद है. दूसरा, a learner can earn certificate or credit on successful completion of the course. मैंने आपको बताया कि ये कोर्स अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ प्रोविजन है कि उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, which was missing in case of OER. OER में ये फैसिलिटी नहीं थी. ये बातें सर क्लियर है या नहीं है सर? यहाँ क्लियर सर. Yes, sir. So that's why जो है सर MOOCs जो है become very popular, and nowadays we are having several massive open online courses platforms which are available in the market. Just like आपने नाम सुना होगा, एक तो स्वयं है जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, हम लोग बात करेंगे आगे चल करके. उसके अलावा आपने नाम सुना होगा कोर्स एरा, ओपन एडेक्स, है ना. There are several such platforms which are available for upholding or for uploading or for launching massive open online courses. तो यहाँ पर है. अब सर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये MOOCs कोर्सेज कैसे होते हैं. जैसे मैंने आपको PG पाठशाला दिखाया था, तो अगेन यू गो टू द सर गूगल, और यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे सर स्वयं. द मोमेंट यू लाइक स्वयं, तो आप देखिएगा सर स्वयं सेंट्रली फर्स्ट आ गया. इसी में देखिए ये कोर्स है. इज माई स्क्रीन विजिबल? बताइएगा सर. यस सर, इट इज विजिबल. हाँ,
तो ये देखिए सर, हमने दिखाया आपको। खैर, एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। सर ये मुक्स में ये जो कंटेंट पड़े हुए हैं वो सेम है जो ईपीजी पाठशाला में, या डिफरेंट है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, अलग है, ये अलग चीज है। हाँ बिल्कुल अलग है। अच्छा, बल्कि उसमें ज्यादा है या कम है? सेम हाँ है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर, इसमें मैं दिखा रहा हूँ सर, अभी वही दिखाना चाह रहा था आपको। तो अब देखिए सर, ये मूक से प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो चलिए सर, ऑल कोर्सेज पहले हम देखना चाहते हैं कि कितने कोर्सेज हैं यहाँ पे। देखिएगा 5 बज गए हैं ना, 5 मिनट के बाद विल टेक ए ब्रेक, है ना, 5 मिनट तक आप लोग मेरे साथ रहिए, फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, ठीक है ना। खैर 5:30 के बाद 5:30, सेकंड सेशन 5:30 ऑनवर्ड्स। हाँ, तो अभी 5 बज गए हैं, तो 5 मिनट के बाद हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद 5:30 पे आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग देखिए सर, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुत सारे होते हैं इनके, तो हमने INI का कुछ कोर्स ले लिया। तो देखिए सर, INI के हमने कुछ, अब देखिए सर, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, सो मेनी कोर्सेज आर। से फॉर एग्जांपल डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, देख पा रहे हैं सर, ये कोर्स का नाम है, देख रहे हैं सर, इज इट विजिबल सर? हाँ या ना बताइए सर। यस यस सर, हाँ जी हाँ सर, सर। ठीक है ठीक है। तो अब देखिए सर, इसको मैंने क्लिक किया, जब मैं क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सर, देखिए यहाँ पर एक कोर्स है जो डेटा साइंस यूजिंग पाइथन नाम का कोर्स है। दिस कोर्स हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फैसल एंड प्रोफेसर नदीम, दो लोगों ने मिलकर किया है। दे बिलोंग टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और राइट नाउ सर देखिए यहाँ पर कितने बच्चे इनरोल हो चुके हैं सर, देखिएगा 17,796 बच्चे इनरोल्ड हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसिव सर, इसीलिए इसको मैसिव बोलते हैं। 17,000 बच्चे, 18,000 बच्चे इनरोल्ड हैं। बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं, मोर देन 20,000 है सर यहाँ पर। राइट हैंड साइड पे देखिएगा सर, स्टैटिस्टिक कुछ लिखे हुए होते हैं कि ये ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है, ये इलेक्टिव नेचर का कोर्स है, 12 वीक, एक सेमेस्टर का मतलब सर 12 वीक होता है। तो 12 वीक के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स है, कितने क्रेडिट का लिखा हुआ है सर? 4 क्रेडिट कोर्स है, यूजी पीजी के लिए है। ये 22 जुलाई से शुरू हुआ है, 11 अक्टूबर तक सर ये चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो रजिस्ट्रेशन कराने का डेट लिखा हुआ है 5 तक 16 तक, और एग्जाम इनका होना है, टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है सर 25 अक्टूबर को सर इनका फाइनल एग्जाम होगा। ये स्टैटिस्टिक है सर। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए सर, एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, जहां पर ये प्रोफेसर साहब ये बता रहे हैं कि इस कोर्स में ये क्या क्या कवर करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है। द पर्पस ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी इज दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द स्टूडेंट में डिसाइड whether it is relevant to him or her or not. If it is relevant or if it is of interest to him, then he or she will enroll into that course. And if it is of not her or his interest, they will not enroll. So by watching this video, they can make such kind of decision. तो 2 मिनट में ये बता रहे हैं कि ये किन किन के लिए बेनिफिशियल है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे। यही चीजें सर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अबाउट दिस कोर्स, छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है इस कोर्स के बारे में, कि इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा, क्या पढ़ाएंगे, किसके लिए बेनिफिशियल है ना। इंटेंडेड ऑडियंस लिखा हुआ है, ये यूजी पीजी इंडस्ट्री प्रोफेशनल किसके लिए है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये कोर्स का लेआउट भी लिखा हुआ है सर, कि वीक 1 में ये कोर्सेज, ये पोर्शन डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सिमिलरली इन वीक 2 द प्रोफेसर विल कवर दीज टॉपिक्स। सिमिलरली इन वीक 3 दे विल कवर दीज टॉपिक्स एंड सो 12 वीक तक के पूरे सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सर, यहाँ पर किसी एक टॉपिक पे लेक्चर नहीं है, यहाँ पर लेक्चर कितने हैं, सो मेनी टॉपिक, 60 टॉपिक्स है, 60 लेक्चर्स है यहाँ पर मौजूद, और सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से हैं ये, है ना। सो दे फॉर्म ए कोर्स बेसिकली। तो अब लड़का क्या करेगा, जब इनरोल करेगा तो 12 वीक तक इस कोर्स को करता है, हर दिन उसको एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर मिलता रहेगा। एट द एंड ऑफ एवरी वीक देयर विल बी एन एग्जामिनेशन, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट विल बी देयर, है ना। तो वो एमसीक्यू टेस्ट उसका होगा। एग्जामिनेशन देने के बाद, यानी 12 एग्जामिनेशन इंटरनल होंगे उसके, जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं। और फाइनली जो 25 अक्टूबर मैंने दिखाया, देयर विल बी फाइनल एग्जाम फॉर द स्टूडेंट। इफ द स्टूडेंट clears these examinations by securing 40% marks in each, then he will be awarded a certificate that this student has completed this course. The course name is data science using Python. This is a 4 credit course and he has secured 68% of mark, whatsoever marks are there. So that will be reflected on the grade sheet of the student. Here you can see these are the books and references. Here you see instructors, है ना। Instructor means the professor's brief biography is given over there and it is how you can earn a certificate. सर कैसे अर्न कर सकते हैं, कितना मार्क्स लाना है नहीं लाना है, सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कितना पासिंग मार्क्स है नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर सर लिखी हुई है। So everything is written over there.
आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड सर कि मूक्स क्या होता है, कैसा होता है, नहीं होता है, ऐसा थोड़ा सा आइडिया हो गया या नहीं हो गया सर? यस सर, हो गया सर। सर तो ये हम लोग यहाँ पर एनपीटीएल, ब्रेक लेते हैं। ये एनपीटीएल वाले भी कराते हैं, ये एनपीटीएल। एनपीटीएल ही का साइट है सर, अभी आते हैं हम लोग उस पर भी, एनपीटीएल का भी अच्छा, दिखा देंगे आपको। ये ठीक है। एनपीटीएल ही है। तो देखिए ना, हम लोग क्या कर रहे थे, आपको दिखाना चाह रहे थे इससे पहले, देखिए यहाँ पर देखिए। तो ये कोर्सेज जो बनाने की जिम्मेदारी है, ये जो है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसको किसको दिया है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एआईसीटी को दिया है सर, सीईसी नाम की एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन, उनको दिया है, इग्नू को दिया है, आईएमबी बैंगलोर को दिया है, आईएनआई कहलाता है सर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे एमयू है, बीएचयू है, इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। एनसीईआरटी को दिया गया है, एनआईओएस को दिया गया है, एनआईटीटीआर को दिया गया है, एनपीटेल नाम के एक इंस्टीट्यूशन उनको दिया गया, यूजीसी को दिया गया है। तो एनपीटेल तो बनाती है जितने भी बीटेक और एमटेक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं, बीटेक एंड एमटेक, उनके सारे कोर्सेज को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? उसको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? एनपीटीएल। एनपीटेल को है। अगर आपको मास्टर लेवल का नॉन टेक्नोलॉजी कोर्स बनाना है, टेक्नोलॉजी कोर्स तो सभी एनपीटेल बनाएगा, नॉन टेक्नोलॉजी जैसे कि एमए इंग्लिश का बनाना है, एमए इकोनॉमिक्स बनाना है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन और दैट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय यूजीसी। ठीक है सर? इसी तरह से बीए इकोनॉमिक्स का बनाना है, बीए इंग्लिश बनाना है, बीए हिस्ट्री, तो देन दिस इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज नोन एज सीईसी, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कंसोर्शियम है, हाँ कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कंसोर्शियम कहलाता है, हाँ सीईसी। स्कूल लेवल के कोर्सेज बनाने हैं तो दैट इज हैज बीन कोऑर्डिनेटेड बाय एनसीईआरटी एंड एनआईओएस। डिप्लोमा के कोर्सेज बनाने की जिम्मेदारी इग्नू को दी गई है। मैनेजमेंट लेवल के कोर्सेज को बनाने की जिम्मेदारी आईएमबी को दी गई। इसी तरह सबको दिया गई। दे आर नोन एज नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है सर, यहां तक इज इट ओके? ठीक है यहां तक? ओके सर। तो हम लोग अब एक कुछ मिनट का ब्रेक लेंगे एंड वी विल अगेन रीअसेंबल एट 5:30 सर। ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। तो 5:30 पे हम लोग दोबारा यहाँ पे रिसेंबल होंगे। सो वी विल रीअसेंबल एट 5:30 शार्प and then we will continue from here and then we will discuss how we as a teacher can develop our MOOCs, massive open online courses. That will be the topic of discussion for the second session. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.